Hello students, today we are studying the Avogadro's law and Gay-Lussac law of Standard 11 Unit 5 States of Matter Part 5. I Kinnari Dave is going to explain you about the Charles law and Boyle's law we have studied in the previous lecture. Now in the today's lecture, I am going to explain you about the Avogadro number or the Gay-Lussac law which governs the gaseous. So in the Boyle's law and the Charles law, we have studied about the temperature is constant. So we can say that the gaseous are having the compressibility. Gases are compressed, and as the pressure is increased, the density also increase. The molecule comes closer, the density they become dense, and due to that we have studied about that higher altitude a breathing problem faces by the mountaineers, and that's why they were carrying the oxygen cylinder. And the same way we by the Charles law we have studied that hot air moves upside, and due to that the formation of the cloud occurs. एंड हॉट एयर बैलून के बारे में भी हमने पढ़ा था. और उसके ऊपर से दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि गैसियस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, and from the Charles law we got the absolute zero temperature or absolute zero scale, that is a minus 273 degrees Celsius. At that temperature, it is a hypothetical temperature. At that temperature exactly we can say that the gaseous R does not exist in the gaseous form. Means at this temperature most of the gas starts converting into the liquid form. They liquefied. So that is the absolute scale or absolute zero temperature. We can say that minus 273 degrees Celsius gaseous volume is zero, simply. Correct, students? So now in the today's video lecture, I am going to explain you about Gay-Lussac law. Today part 5, unit 5, standard 11. You are with Kinnari teacher. So the today's our topic will start, that is a Gay-Lussac law. And previously we have studied about the temperature. Boyle's law, temperature is constant, so that graph is known as the isotherm graph. Charles law we have kept constant as a pressure. The graph it is known as isobar graph. And now for the out of that 4 parameters of the gaseous, we have the Gay-Lussac law keeping the volume as a constant and showing the effect of pressure and temperature on the gaseous molecule. So let us keep the volume constant here. It was discovered by Gay-Lussac in 1703, and here volume is constant. As we have studied in the Charles law, the same way here also I can say that in the Charles law we have studied that for each degree changes of the temperature from 0 degree Celsius to 1 degree Celsius, then volume is increased at 1 by 273. That we have studied for the Charles law. So here we are keeping the volume constant. So the same way we can say for this also to by increasing the temperature, or that Charles law also says the same thing, by increasing the temperature or decreasing the temperature or pressure, keeping the pressure increase or decrease, volume is constant. So here the pressure will be increased 1 by 273, as like in the Charles law volume is increased 1 by 273. For each degree Celsius the temperature is increasing. So here also we can say that pressure increase or decrease, या तो वो राइज होगा या तो वो फॉल होगा, पर कितना राइज और फॉल होगा, तो दैट इज बाय 1/273.
प्रेशर हमेशा इतना ही राइज हो सकता है या तो इतना ही फॉल हो सकता है। तो ये जो है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इतने प्रेशर राइज या तो इतना प्रेशर फॉल हो सकता है। अप एंड डाउन सिर्फ उतना ही पॉसिबल है। सो इट राइज एंड फॉल एवरी एट 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1/273। It rise or fall every increase of temperature 1 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे हमने वहां पर चार्ल्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वो आइडेंटिफाई किया था। तो द सेम वे हियर आल्सो वी कैन से दैट PT, T is a final time, so PT is equal to P0। चार्ल्स लॉ के लिए यहाँ हम V0 लिख रहे थे। So here we can write the P0 1 plus, here we are taking the time T, so here we can write that T upon 273। Same thing we have written for this Charles law. Maybe you have remember that we have written for this, it is a V0. We consider it as a V0. Students, if you are thinking, then I will write for you. Otherwise, I don't think I have to write. But then also, for the Charles law, चार्ल्स लॉ के लिए हमने जो कंसिडर किया था वो था हमारे पास में Vt इज इक्वल टू V0 और इनटू ब्रैकेट हमारे पास में था 1 प्लस T अपॉन 273। Why? Because for the Charles law we have kept the pressure as a constant, while in the Gay-Lussac law we have kept the volume as a constant. So that's why we are getting this result from the Charles law to the Gay-Lussac law. Now here, as you know that by taking the LCM P0, here you get 273 plus T divided by 273. Now you know that 273 plus T, as we have considered here also, that is a T. So here we can say that 273 plus T is considered as a T. And the 273 is also a constant. So by putting this value over here, we get P0 into T upon 273. Now this both the values are constant and we are talking about the T timing. So here we can say that Pt is equal to P0, means P is directly proportional to T. That we can prove over here. Okay, pressure is directly proportional to temperature. While because here T is constant and 273 is also constant value. So Pt is equal to, we get the P0. So T time पे pressure जो है वो pressure हमारा initial pressure, मतलब temperature बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा या तो प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर, तो वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल की साइन हम कैंसिल करके कांस्टेंट रखते हैं तो P इज इक्वल टू वी गेट KT. दिस इज द रिजल्ट which given by Gay-Lussac, or this law is known as Amonton's law also. So this law is known as Amonton's law also. Student, as I said, this all the values are very important to solve the numericals. एंड ये चैप्टर में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स
पूछे जाते हैं, because one or the other values and they are correlated with each other. That's why just try to understand all the values कहाँ से हम लेके आते हैं वो, और उसको अच्छी तरह से समझना भी जरूरी है, बिकॉज द लॉ इज ऑल्सो sometimes asked in the exam for the question of 2 marks. So now if we plot the graph versus P and T. We plot the graph versus P and T. So as we know that P is directly proportional to T, so the graph will be the straight line. Means the pressure increase, temperature is increasing. Here you can see that this temperature is increased, the pressure also increase. So this is the direct graph. Now if we plot the graph versus T by 1 by T, अगर हम प्रेशर के साथ में 1 by T का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे हमने चार्ल्स लॉ में और बॉयल्स लॉ में ड्रॉ किया था, उसी तरह से यहाँ भी हमें वो कर्व्ड मिलेगा. सो द नेक्स्ट ग्राफ वी प्लॉट, दैट इज प्रेशर और 1 बाई टी का ग्राफ है. तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है उस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है, तो ये आपका कर्व्ड हुआ, बिकॉज हियर वी हैव टेकन 1 बाई टी, दैट्स व्हाई. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर, 1 बाई टी है इसीलिए. तो ये आपका प्लॉटिंग हुआ P वर्सेस 1 बाई टी का. अब सेम वे अगर हम इसका प्लॉटिंग टेम्परेचर के साथ में करते हैं, P बाई टी, अगर P बाई टी का ग्राफ हम टेम्परेचर के साथ में करेंगे, तो जैसे हमने चार्ल्स लॉ में V बाई टी का ग्राफ ड्रॉ किया था, उसी तरह से हमने बॉयल्स लॉ में ड्रॉ किया था, तो हमें वो ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मिल रहा था. द सेम वे हियर ऑल्सो, व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ फॉर P बाई टी वर्सेस T, we'll get this parallel to the x axis. Means the value of P by T is totally constant. We can say that P by T is equal to constant. ये हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं. And if we draw the graph for log P and log T, if we plot the graph for log P and log T, then here the absolute zero temperature के हिसाब से we'll get the graph here in such a manner. So this is about the Gay-Lussac law, and which says that pressure and temperature are directly proportional to each other. Means at given mass of a substance, if we'll keep the volume is constant, then the pressure is increased, as by 1 by 273 the temperature rises. And this is the experimental explanation for the Gay-Lussac law. Now we'll go with the next law, that is known as the Avogadro law, and this Avogadro law shows the relation between the mass. Here the fourth parameter is remaining, because in all the three laws we have kept the mass as a constant, and along with the mass we have kept the temperature constant, pressure constant, and here we have kept the वॉल्यूम कांस्टेंट. पर मास हमने कहीं पर भी वेरिएबल में लिया नहीं है. सो हियर वी आर नॉट कीपिंग मास एज ए कांस्टेंट. Other than the mass, we are keeping temperature and pressure as a constant. So we are going to study the relationship between volume and number of moles in Avogadro's law. So next is our Avogadro's law. Here, as I said,
the relation between pressure and temperature constant. Pressure and temperature is constant. So relation between volume and moles. This law shows the relation between volume and mass or number of moles by keeping pressure and temperature constant. So that's why here we can say that at standard temperature and pressure. तो standard temperature क्या है? हर एक सब्सटेंस के लिए एक टेम्परेचर डिसाइड किया है, तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हम ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर. और इफ केल्विन के अंदर लेना है तो वी कैन से दैट 273 Kelvin is a standard temperature. So here we'll write for that at STP. Here हम उसको कह सकते हैं standard temperature pressure. तो STP के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 Kelvin is considered as a standard temperature और 1 atmospheric pressure या तो 1 बार प्रेशर या तो 76 सेंटीमीटर या 760 millimeter is considered as a standard pressure. So here mostly 1 bar pressure or 1 atmospheric pressure is considering as a standard pressure. और ये कंडीशन नहीं है, उसके अलावा की जो कंडीशन है दैट इज नोन एज द एनटीपी, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एनटीपी. सो हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम एंड मोल्स के बीच में रिलेशन क्या है. सो नंबर ऑफ मोल्स, एज यू नो द मास इज कंसिडर एज अ नंबर ऑफ मोल्स. सो हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स यू आर इंक्रीजिंग, same thing volume will be increased. It is very clear ideas about volume and mass. So we can say that volume is directly proportional to n. N is considered as a number of mole of a gaseous. ठीक है ना? So it is a number of moles of gas. And if we'll say that the number of mole is considered as the 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecule. तो वो हमने उसकी वैल्यू लेके रखी है. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecule. सो ये हो गया हमारा एवोगेड्रोज लॉ और इसी को हम एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं. सो सपोज इसके ऊपर से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. वॉल्यूम चेंज होता है जब हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं और 1 मोल अगर हमारे पास में कोई भी मीथेन है, इथेन है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कोई भी है, 1 मोल अगर हमारे पास में गैस है तो वो गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ उसमें होंगे मीथेन के, इथेन के. वो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर बात ये आती है कि दिस वी हैव स्टडीड द 3 लॉज. ये लॉ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ से हमने उसको डिराइव किया हुआ है. सो वी आर कंसिडरिंग द 3 लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगेड्रोज लॉ. सो इफ एनी ऑफ द गैस विल फॉलो ऑल द 3 लॉ स्ट्रिक्टली, मतलब वो तीन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, एक्चुअली इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो दैट गैस इज नोन एज द आइडियल गैस. One more time students, ideal gas means what? Because now the topic comes for this ideal gas and real gas. तो ये concept आप clear रखो. What is ideal gas?
Ideal gas means all the three laws will be followed strictly by any of the gas which is known as the ideal gas. And the real gas that follows under the certain condition. Real gas means ऑक्सीजन एटमोस्फियर में है तो वो ऑक्सीजन रियल गैस कहा जाएगा. तो दे फॉलोज this rule in under the certain condition, and that's why it is known as the real gas students. तो अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स देना है हमें, तो किस तरह से हम कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय हमारा एवोगैड्रो नंबर. सो हियर वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो उसके बाद डिवाइड बाय हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर. सो दैट इज कंसिडर एज अ N0 and that will be a Avogadro number or N0. It is our Avogadro number and N0 की वैल्यू ये है हमारी वैल्यू ऑफ N0. सो नंबर ऑफ मोल इसके ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू वी कैन से दैट N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो है उसे हम कैपिटल N से लिखते हैं तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर N0. ये हमारे नंबर ऑफ मोल फाइंड करने की फॉर्मूला हुई. तो उसके ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट मीन्स N is directly proportional to N means number of moles directly proportional to number of molecules. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. और ये जो हमारा है नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके बेसिस पे है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट V is directly proportional to N. तो यहाँ हम ये भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस इज अवर एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23 and this law is considered as Avogadro law. And the ideal gas means all these three laws will be followed strictly by any of the gas. That gas is considered as an ideal gas student. So today's topic we are going to end with this. Next video I am going to explain you the behavior of the ideal gas or ideal gas equation. So till the time students you just study all these four laws properly, and we are going to study the numericals of this on the basis of these formulas also very fast students. Thank you so much for watching and sharing my videos. Thank you.